I put all my focus, apart from public speaking, in writing book. Took me 2 years. That's called 7-figure agency mindset A to Z. जो समझदार entrepreneur है, जिसका थोड़ा बहुत exposure है, he can make $1 million. First things first, knowing oneself, who you are. इनफरादियत से निकल के इज्तमाइयत में जाना है. And every one of you is capable. Trust me. You just have to believe it. Responsibility can be on all of you guys, but accountability would be you or you or you. मेरा नाम हामिद है. I run multiple tech companies like IT agencies in United States and in Pakistan as well. It's been 18 years into the journey. हमारी agencies हैं, they are called Software Pro, eCom Development NYC, HTML Pro, Napolo, then another agency that's called STL. तो मुख्तलिफ agencies हमने niche based agencies बनाई. They're focused on their own world. Another agency which I'm creating right now is called Shop HTML Pro, focused on converting designs into development. اب کرنا کیا ہے بیسیکلی. سو میں نے کیا کیا کہ 2 سال پہلے وی اسٹارٹیڈ اسپیکنگ ٹو دا عام جنتا. جب عام ساتھیوں میں پبلکلی آئی اسٹارٹیڈ اسپیکنگ اے لاٹ, آئی فاؤنڈ کہ دیر واز اٹریکشن اینڈ دیر واز اے مسنگ لنک, جو کہ شاید ہم نے 14-15 سال کی جو پہلے ایکسپیرینس تھا اس میں تو حاصل کر لیا ہے, بٹ میں نے بینچ مارک تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے ساتھی جو ہیں ہمارے, ان کو اس روڈ میپ کا نہیں پتہ تھا. دیر کوڈ بی ملٹیپل ریزنس کہ ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر نہیں ہے, ان کا جاب ایکسپوجر نہیں ہے, ان کا سیلس کا ایکسپوجر نہیں ہے, ان کا سسٹم کا ایکسپوجر نہیں ہے, ان کا لیڈرشپ کا ایکسپوجر نہیں ہے, یا ان کو ریلیجیس ایکسپوجر نہیں ہے. اور میں اس کو بھی ایکسپلین کروں گا کہ وائی آئی سیڈ دیٹ. ان ایکسپوجر نہ ہونے کی وجہ سے دیر واز نو پراپر روڈ میپ فار ایجنسیز ان پاکستان اسپیشلی, کیونکہ زیادہ پاکستان میں ہم فری ہسل میں زیادہ پاکستان میں ہی کر رہا ہوتا ہوں. سو میں نے یہ طے کیا کہ انسٹیڈ کہ میں کورسز والی سائٹ پہ یا ویڈیوز بنا کے بتانا شروع کر دوں, I put all my focus, apart from public speaking, in writing book. I wrote a book that's called, it took me 2 years, that's called 7-figure agency mindset A to Z. Now we are talking about with this book or with this session کہ 2 کروڑ 32 لاکھ مہینے کا ریونیو کیسے ہوگا. I'm not talking about profits. ابھی اتنا مشکل نہیں کر رہا میں. And I'm talking about in the real world. میں آپ کو کوئی out of the way باتیں نہیں کر رہا. It's very common. جو سمجھدار entrepreneur ہے, جس کا تھوڑا بہت exposure ہے, he can make $1 million. So first thing is believe. What is it? Believe that you guys can do it. Even with the limited resources, even with whatever is happening across, if Hamid, I'm just an ordinary person like you guys. If Hamid can do it, you guys can also do it. آپ میں کوئی کمی نہیں ہے. Number 1, believe that you can make $1 million or 2 crore 32 lakh per month revenue by selling services, let's say, or agency services or tech company کی services کو بیچتے ہوئے. اس کو obtain کرنا ہے. So we need to understand the number 1 thing. میرا book کا جو پہلا چیپٹر ہے, it says بڑی سب سے ضروری چیز, first things first, knowing oneself, who you are. And it's a mindset book. اس میں بہت ٹیکنیکل باتیں بھی ہیں, اس میں تھیوری نہیں ہے آپ کو ملے گی, لیکن it's a complete mindset shift, because in order to make $1 million and not $1,000 per month, I repeat, کیونکہ فریلانسر زیادہ تر $1,000 پہ اکتفا کر رہے ہوتے ہیں. اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. You can be the leader and you can tell the world کہ بھائی that's how to do the business. These are the right ways to do the business. So اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا. Last 5 years میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو پاکستان have produced over 2 million freelancers. تقریباً 20 سے 30 لاکھ اس ٹائم فری لانسرس پاکستان میں بستے ہیں. 30,000 جو ہے وہ آفیشیل نمبر ہے, 80,000 فیس بک, 90,000 فیس بک کہتے ہیں ایجنسیز ہیں پاکستان میں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ انفرادی سوچ. دا فرسٹ تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وچ آئی ٹولڈ ٹو دا ہوسٹ ایز ویل, انفرادیت سے نکل کے اجتماعیت میں جانا ہے. forget thinking only about yourself, and trust me, there is a karma that exists. And what is karma? If I work on making you successful, what will happen? I will get success back. And trust me, it happens even in Pakistan 80 to 90% of the case. وہ جو باتیں ہیں نا کہ یار ان کے ساتھ صحیح نہ کرو, یہ تمہیں خراب کریں گے and all that, جتنا آپ بڑا سوچیں گے انفرادی سے. سو فری لانسنگ کیا ہوتی ہے؟ انفرادی سوچ. I'll make $500, I'll make $1,000, I'll make $2,000. جب آپ نے اپنے آپ کو بڑا کرنا ہے, اپنی فیملی کو بڑا کرنا ہے, اپنی سوسائٹی کو بڑا کرنا ہے, اور سب سے ضروری پاکستان کو بڑا کرنا ہے. میں اکثر ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اسٹڈی اباؤٹ روتھسچائلڈ فیملی. ایک فیملی جس نے مڈل ایسٹ کے اندر ایک ملک بنایا,
जिसने पूरी दुनिया को तंग किया बस, और वो इतनी मजबूत फैमिली थी कि जिसने बेसिकली हर तरीके से सपोर्ट करके, ठीक है, आप समझ रहे हैं कि एक फैमिली ने एक मुल्क बना दिया और पूरी दुनिया को कंट्रोल किया. मैं अब नेगेटिविटी के एतबार से नहीं कह रहा, आई एम जस्ट आस्किंग यू, इट टेक इंस्पिरेशन इन योर ओन वे. हमारी सोच क्या है? हमारी सोच ये है बेसिकली कि अगर मैंने अपने आप को बना लिया, आई एम प्रीटी गुड. एक्चुअली नहीं, यू आर पार्ट ऑफ अ लार्जर इकोसिस्टम विच इज़ पाकिस्तानी, विच इज़ मुस्लिम. अगर इफ़ यू मेक मोर मनी, दैट इज़ रिक्वायर्ड by other people around you. So if you are capable and you're not making money thinking कि यार मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, I think this is a wrong mindset. Because schools की कितनी ज़रूरत है पाकिस्तान में. साकिब साहब ने पूरे पाकिस्तान में जो है ना वो स्कूल कॉलेजेस, एक कैपेबल बंदा उठा और उसने सारी अन्नी डाल दी पूरे पाकिस्तान में. And every one of you is capable. Trust me. You just have to believe it. So shift from 1% to 100 people to 1000 people. टाटा के अंदर कितने एम्प्लॉइज हैं ये बताएं. You know how much bigger they are than you? 100 times. The simple math says कि अगर आपने उनको compete करना है तो आपने आपको भी 100 times बढ़ा लें. Which is अगर आप एक बंदे हैं तो अपने जैसे 100 copies प्रोड्यूस कर दें जो कि अमाउंट ऑफ मनी प्रोड्यूस करें विदाउट थिंकिंग कि मैंने ये जो प्रोड्यूस किया है ये मुझे ही आके खा लेगा. क्योंकि इट हैपेंड विद मी एज वेल, इट हैपेंड विद अस एज वेल कि हमने जिनको प्रोड्यूस किया उन्होंने हमें नुकसान भी पहुंचाया. बट देन यू लर्न. इट हैपेंस एवरीवेयर. आप यूएस में भी चले जाएंगे, वहाँ पे भी स्कैम्स हैं. मुझे एक गोरे ने अभी $20,000 का स्कैम किया, उसके लड़ते लड़ते मैं $9,200 का लॉयर को पे कर चुका हूँ. इट हैपेंस एवरीवेयर. गलत काम होते हैं, बुरे, अगर आपको चीज़ें आती हैं तो उसे लर्न करें, आगे निकलें. सो द फर्स्ट थिंग इज फ्रीलांसिंग से आपने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तरफ जाना है. एंड इवन इफ दैट टेक्स 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, 20 years, do not worry. रास्ता जब पता होगा तो बेशक कछुए की चाल भी चलेंगे तो अल्लाह ने अगर चाहा तो कभी ना कभी पहुंच जाएंगे. अब उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, वी डिस्कस दैट. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नोइंग वन सेल्फ, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ हु यू आर, एंड बेस्ड ऑन हु यू आर वो वाली एजेंसी बनानी है, वो वाला ई-कॉमर्स का स्टोर बनाना है. बिकॉज मूविंग डाउन द रोड लॉन्गर रन में आपके जज्बात आपको चलाते हैं साथ. एनीथिंग दैट यू स्टार्ट एज ऑफ टुडे, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद धूम खत्म. क्यों? बस एकदम सोच आई कर लिया. नो, रादर अभी जो मैं काम कर रहा हूँ दैट्स हु आई एम. आई वांट टू सी यू सक्सेसफुल एंड आई एम एंजॉयिंग इट. सो आपने मार्केट चूज़ करनी है एंड देन इट सेज बीइंग इन द टॉप 10 सक्सेस फार्मूला. टॉप 10 पे कैसे जाना है ये मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, अभी आपको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आपको मैंने सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो बताना है. देन इट सेज बिल्ड ट्रस्ट टू अट्रैक्ट more money bags. That essentially means that why would someone give you more business? Have you ever thought about it? तो होता है क्या है बेसिकली, आई हैव क्लाइंट्स के लिटरली कोशिश करनी है झूठनी, गलती तो हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, लेकिन कोशिश करना नहीं, हुआ 2 नंबरी नहीं करनी. एंड ट्रस्ट मी, दे अंडरस्टैंड. अगर आपको ये लगता है कि आप नीचे जाके कुछ ना कुछ स्टैटिक कोड डाल देंगे, इन योर केस काम पूरा नहीं करेंगे, मिसकमिट कर देंगे, देयर आर लॉट ऑफ वेज कि आप चीज़ को ख़राब बेच सकते हैं या मैं चीज़ को ख़राब बेच सकता हूँ, सर्विसेज के अंदर कमी आ सकती है, कमिटमेंट को पूरा किए बगैर मैं किसी चीज़ को डिलीवर कर दूँ, डेडलाइंस मीट ना करूँ, ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स, उसकी प्राइवेसी को ब्रीच कर दूँ, उसने जो डेटा दिया था वो मैं अपने डेटा में यूज़ कर लूँ, इजाज़त ना लूँ, ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स क्रिएट फस एंड मिसट्रस्ट. एंड इफ़ यू अबाइड ऑल ऑफ दीज कि आप कमिटेड रहें, सही टाइम पे डिलीवर करें, अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज या अच्छी प्रोडक्ट्स बेचें, इन टाइम बेचें, अच्छी कस्टमर सपोर्ट दें, कर्टेसी दिखाएं, अच्छे तरीके से खंदा पेशानी के साथ पेश आएँ, तो क्या होगा, दे विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू. बदतमीज़ी ना करें. तो हमने, क्योंकि देखें आपको जो पता होता है ना कि यार मैंने अपनी बीवी के साथ या मैंने अपने खाविंद के साथ सारी उम्र गुजारनी है, तो फिर आप जो है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म सोचते हैं, ऐसे ही है. एंड देन व्हेन यू थिंक लॉन्ग टर्म, तो आपकी जो बेसिकली सोच है वो बदल जाती है. तो फिर आप छोटे छोटे जो जिसको कहते हैं ना कि शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते. आपको पता है आपने लंबा रहना है तो उसको उस तरीके से लेके चलो. तो जब आपने सोच लिया कि आपने 100, 1000, 500 की कंपनी बनानी है इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो फिर यू कैन नॉट अफोर्ड शॉर्टकट्स. ठीक है, हाँ अकेले हैं, चलो चला भी गया, उसको क्या पता, एक और क्लाइंट ले आऊँगा, एक और क्लाइंट ले आऊँगा. बट ट्रस्ट मी, अगर आप अच्छे तरीके से काम करेंगे. सो द बुक चैप्टर सेज बिल्ड ट्रस्ट टू अट्रैक्ट मोर मनी बैग्स. मनी बैग्स, अ लॉट ऑफ मनी, राइट. अच्छा, फिर मैंने इसके अंदर एजेंसी की वेबसाइट कैसे बनानी है, ऑडियंस को एंगेज कैसे करना है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है. ये अभी मैं इसलिए नहीं करूँगा कि आप लोग अगर बुक लें तो उसमें एक्सप्लेनेशन है. जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, it says your expectations get hurt when there is no hierarchy. Yeah, that's a chapter name. Your expectations get hurt when there is no hierarchy. Hierarchy क्या होता है वैसे? System, processes, blueprints. System of rewards and penalties.
accountability numbers for everyone. And accountability is actually put on one entity, which could be one person or one department. Responsibility can be on all of you guys, but accountability would be you or you or you.